All right, during this next session, we are going to focus on how to become a master retailer. अभी दूसरे सेशन में हम लोग फोकस करेंगे एक मास्टर रिटेलर कैसे बनते हैं. If we're going to reach 200,000 people with the super green chlorophyll, we have to be master retailers. अगर आपको 2 लाख लोगों तक क्लोरोफिल पहुंचाना है तो आपको मास्टर रिटेलर बनना पड़ेगा. So during this session, I'm going to share with you my insights that I've learned on how to be a master retailer. अभी इस सेशन में आपको सिखाऊंगा कि मेरे करियर में मैंने कैसे सीखा एक मास्टर रिटेलर बनने के लिए. Not just a retailer, a master retailer. सिर्फ रिटेलर नहीं पर एक मास्टर रिटेलर. So let's talk about the benefits of really striving for excellence to be a great retailer. अभी हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा से बेहतर रिटेलर बनने में क्या फायदा है. Number 1 is you will earn retail profits. पहला है आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट. Now, when you sell our products, you need to sell them at retail. जब हमारे प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तो आपको रिटेल प्राइस में बेचना है. If you sell a product to somebody at wholesale and they then join the business, they will sell at wholesale too. अगर आपने किसी को प्रोडक्ट होलसेल में बेचा और वो उसके बाद आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद वो भी होलसेल में ही बेचेगा. And if you're going to go through the effort of retailing product, you should make a retail profit. और जब आप रिटेलिंग के लिए उतरते हो तो आपको रिटेल प्रॉफिट करना चाहिए. Number 2 is if you really strive for excellence in what I'm going to talk about today, you're going to have better results than you would otherwise have. अगर आप हमेशा बेहतर से बेहतर बनना कोशिश करते रहेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. Number 3 is that you will be a better teacher as a result of what you've learned. आप एक अच्छा टीचर बनोगे जो आपने सीखा उसको अप्लाई करने के बाद. One of the greatest benefits of striving for excellence at being a master recruiter and a master retailer is that you will be a much better teacher of how to do these things. सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप ये मास्टर रिटेलर बनते हो तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से सिखा सकोगे. And it's a result of your teaching that's going to have the greatest influence on your organization. और ये सिखाने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको. It's not so much the money you make retailing that will make the biggest difference. It's what you're going to learn when you strive for excellence that you can then teach to others that will have the greatest impact on your income long term. ऐसा नहीं है कि आप जो रिटेलिंग करने के बाद जो प्रॉफिट करते हो वो सबसे बड़ा होगा, बट सबसे बड़ा वो होगा जब आप लोगों को सिखाओगे कैसे करना है रिटेलिंग और वहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. The fourth benefit is you will be leading by example. और चौथा में है आप एग्जाम्पल दिखा के लोगों को लीड करोगे. Now I know many of you in this room are business builders. मैं जानता हूँ इस रूम में बहुत लोग हैं जो बिजनेस को लेके चल रहे हैं. But if you're not retailing the product, your people aren't going to be retailing the product. बट अगर आप प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं कर रहे हैं तब आपके लोग भी प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं करेंगे. And when you are out retailing the product, you need to talk about what you're doing in the retailing of the product. और अगर आप लोग सब रिटेलिंग कर रहे हो तो आप लोग जब लोगों को मिलेंगे तो आपको बोलना पड़ता है आप कैसे करते हो रिटेलिंग. You need to brag about what you're doing when you're retailing products so that people know that's important. आप लोगों को बहुत बात करना पड़ेगा इसके ऊपर ताकि लोग समझे कि आप क्या कर रहे हो, रिटेलिंग कैसे कर रहे हो. The next benefit is according to the Direct Selling Association, a person who joins the business after becoming a customer first is 5 times more loyal than a person who just joins the business without having first used the product. ये डायरेक्ट सेलिंग का जो रिपोर्ट है कि एक आदमी कस्टमर बनने के बाद जब हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है तो हमारे साथ वो 5 गुना रॉयल होता है. ये अगर इसके अलावा अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्वाइनिंग करने के बाद यूज करता है तो उसका हम लोग को उल्टा रिजल्ट मिलता है, डिफरेंट रिजल्ट. Everybody understand this point? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? Yeah. Okay. When somebody's using the product and then they join, there's no surprises. They're much more committed than somebody who just joins the business without having first used the product. जो आदमी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके हमारे बिजनेस में आता है उसको रिजल्ट ठीक सही रिजल्ट मिलता है. और अगर कोई आदमी हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं करके हमारे आता है बिजनेस में तो उसको कुछ और रिजल्ट मिलता है. Now, if you've noticed during this presentation and my presentation on how to be a master recruiter, I talk about the benefits.
मैंने जब आपसे बात किया था मास्टर रिक्रूटर बनने के बारे में, तब मैं बोला था क्या बेनिफिट मिलता है उसको. One of the things you want to do in all your presentations is to make sure it's clear to your audience the benefits of doing what it is that you're going to teach or talk about. आप जब भी किसी को प्रेजेंट करते हो, आप क्या कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए ताकि वो आगे समझे आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इसको. Myself personally, I focus on retailing product. मैं पर्सनली रिटेलिंग में फोकस करता हूँ. Not just because I want to be a good example, but because I know people who could benefit from our products. इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा रिटेलर बनना चाहता हूं, बट मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या खूबियां हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर कैसे रिजल्ट्स आपको मिल सकता है. I have lots of friends who aren't in this business, मेरे पास इतने दोस्त हैं कि हमारे बिजनेस में है ही नहीं वो, and I want to help those friends. और मैं हेल्प करना चाहता हूं. The sixth benefit is if you are a master retailer and you're having a positive impact on people's lives, you're going to get referrals. अगर आप एक मास्टर रिटेलर हो और लोगों के लाइफ में आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो आपको रेफरल मिलेंगे. You recommend Slim or Balance to somebody whose blood sugar drops, it's easy to say, who else do you know who has high blood sugar? अगर आप किसी को स्लिम या बैलेंस रिकमेंड करते हो जिनका ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनसे पूछ सकते हो और किनको जानते हो जिनके पास ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है. You sell the super chlorophyll product and somebody's skin improves, you can say, who else do you know who could use some improvements in their skin? आपने किसी को सुपर क्लोरोफिल बेचा और उनका स्किन में इंप्रूवमेंट आया, उनसे पूछ सकते हो आप किनको जानते हो जिनके पास स्किन का प्रॉब्लम है. So let's talk about the first step in the process is that you need to build product knowledge. सबसे पहला स्टेप है आपको प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज होना पड़ेगा. Remember the keys to success. Number one is you need to have a desire. कि सक्सेस का नंबर 1 चाबी है आपके अंदर डिजायर होना पड़ेगा. At whatever it is that you want to be successful at in life, you need to first have the desire. किसी भी चीज में लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले होना पड़ेगा डिजायर. Then you need to build your knowledge. उसके बाद आपको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा. Then you need to put together a plan. उसके बाद आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा. Then you need to execute that plan with excellence. उसके बाद उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. And then you need to make refinements during the process so that you continue to improve. और उस प्रोसेस में आपको रिफाइनमेंट करते रहना पड़ेगा. So the first step is to use the products. और सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करना. There's no better way to really understand the benefits of these products other than using them. सबसे बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है प्रोडक्ट्स के बारे में, यूज करके ही आपको मालूम होगा. This is why everybody that I bring into the business, when I'm going over the getting started step of placing an order, I want them to buy at least one of all the products so that they can be familiar with them and so they can talk about them with credibility. इसीलिए जब भी मैं किसी को इस बिजनेस में लाता हूं, मैं चाहता हूं वो हमारे हर एक प्रोडक्ट्स के एक प्रोडक्ट्स खरीदे और उसको यूज करे. If you bring somebody in the business and all you bring them in the business with is the super chlorophyll, all they can really talk about is super chlorophyll. अगर हमारे बिजनेस में आप किसी को लाते हो और उसको सिर्फ सुपर क्लोरोफिल देते हो, तब वो सिर्फ सुपर क्लोरोफिल के बारे में ही जानेंगे. Now you bring somebody in the business and all they've used is super chlorophyll and they're presenting the business and the person says, well, how do you like the balance? अगर अभी ऐसा मानिए उसने सुपर क्लोरोफिल खाया और वो अपने बिजनेस को दिखा रहे किसी को और उन्होंने सुपर क्लोरोफिल का बात किया, तब अगर अगला पूछता है उसको बैलेंस के बारे में बोलिए, तो वो क्या बोलेगा? They go, I don't know, I haven't used it. तो वो बोलेगा मैं तो इस्तेमाल ही नहीं किया उसको, मैं जानता नहीं बैलेंस के बारे में. How do you like the Slim? आप वो अगर पूछा स्लिम कैसा है, I don't know, I haven't used it. वो बोलेगा मैं जानता नहीं, मैं यूज नहीं किया अभी तक. How do you like the Activate? आप एक्टिवेट के बारे में क्या बोलते हो? I don't know, I haven't used it. वो बोलेगा मैं जानता नहीं, मैंने यूज नहीं किया. How much credibility does that person have with their prospect if they haven't been using the products? कैसे लगेगा प्रोस्पेक्ट को इसके बारे में? See, the best thing you could do with everybody you bring into your business is to make sure that they are using our products so they can sit down and talk about them with credibility, whether it's a potential customer or a prospective distributor. जिसी को भी आप हमारे इसमें लाते हो, बिजनेस में लाते हो, आपका होना चाहिए कोशिश वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करे और उसके बारे में जाने. The second way to build knowledge on the products is to read our website and our marketing materials. और दूसरा चीज है हमारे वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, हमारे मार्केटिंग मटेरियल को पढ़ सकते हैं. Now I know that most of you don't like reading. मैं जानता हूं बहुत लोग हैं यहाँ जो
पढ़ना पसंद नहीं करते। You have to decide how important is it to you to be knowledgeable on these products. आपको तब समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। And if it's not important, then don't read or learn anything about them. और अगर आप समझते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पढ़िए आप। And then you might as well just quit today because you won't be successful. और फिर आप छोड़ देंगे बिजनेस को, बिकॉज आप इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। The more that you learn about our products, the more that you can educate people on our products and the benefits of these products. जितना जानोगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में उतने लोगों को आप बोल सकोगे, एडुकेट कर सकोगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। The more knowledge you have on our products, the more that you will speak with authority when talking about our products. जितना नॉलेज होगा आपके अंदर उतने आप अथॉरिटी से बात कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। The third thing you should do is to watch whatever videos that are available here in India on our products. उसके बाद आपको हमारे जितने वीडियोस है प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सब आपको देखना चाहिए। Not only will that educate you on the products, but will educate you on the tools that are available to introduce the products. सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, बल्कि आपको जानकारी होगा हमारे प्रोडक्ट्स को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है। If I'm sitting down with Sanjay after a presentation and I ask him what else he needs to know to make a decision, and he says I need to learn more about the super chlorophyll, nothing would be better than if I had him watch one of our videos. अगर मैं संजय के साथ बैठता हूँ और पूछता हूँ और क्या जानना है आपको, और अगर वो बोलता है मेरे को जानना है सुपर क्लोरोफिल के बारे में, तब मैं अगर मेरे पास वीडियोस हो तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। I could even pull out my smartphone and have him watch the video while I'm sitting with him. मैं अपने स्मार्टफोन से भी उनको दिखा सकता हूँ वीडियो। Now he learns about super chlorophyll, and now he realizes we got some great tools to introduce these products to अभी उन्होंने people. देखा हमारा वीडियो सुपर क्लोरोफिल का, उसको समझ में भी आ गया कि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए मटेरियल्स भी हैं। And for all of you as leaders, you need to be familiar with all the tools that are available here in India, not just to educate yourself, but so that you can educate others. और आप सबके लिए ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, सबको ये जानकारी होना चाहिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप खुद के लिए अच्छा है और आप दूसरों को भी दिखा सकते हो। The fourth thing that would help you build product knowledge is to attend all events. और इसके बाद हमारे प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आप अगर हमारे इवेंट्स को भी अटेंड करते हैं तब भी आपको बहुत जानकारी मिलेगा। Just like today, you've learned little things about how to be more successful in our business. जैसे आज आपने बहुत कुछ समझा हमारे बिजनेस के बारे में। When you attend events where our products are discussed, you will learn little things about those products that will help you be more effective at explaining them. जब हमारे इवेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको वहां में आना चाहिए ताकि आपको और जानकारी मिले। Now, there are 4 ways to build a successful retail business. 4 तरह से आप एक अच्छा रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। If I was to pull out that whiteboard and I was to ask you, how can a business right down on the street below us, what are the ways that that business can grow? And we made a list of 1,000 things. All 1,000 of those things would fall into these 4 categories. अगर मेरे को लिखना चाहे कि एक बिजनेस को सही तरह से करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, हजारों में से ये 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। When we're done here today with this session, you will not be able to identify one additional way to build any successful business other than the 4 ways that I'm going to describe. ये सेशन खत्म होने के बाद आपको इस 4 चीजों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा जो कि जरूरी है हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। So let's take a look at these 4 ways. आइए देखते हैं। Number 1 is to acquire new customers. पहला है नया कस्टमर लाइए। Whether you're the tire shop down on the street or you are a Unicity distributor, your role is to acquire new customers. अगर आपके पास टायर का दुकान हो या आप यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका रोल है नया कस्टमर लाना। And today we'll talk about some of those ways. उसके बारे में बात करते हैं अभी। The second way is to increase the size order placed by those customers. दूसरा है वो प्रोडक्ट का जो साइज है उसको बड़ा करना है आपको। That would be like if I am a shop down on the street selling tires and I'm selling a tire to someone, I might look at their helmet and say, would you like to get a new helmet? अगर मेरा टायर का दुकान है और मैं टायर बेच रहा हूं तो मैं उनका शायद हेलमेट को देखूंगा और पूछूंगा आपको हेलमेट भी चाहिए क्या। So when you're selling one product to someone, your goal is to ideally sell 2 or 3 products to the same person. उसका मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो, आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि आपको 2 से 3 प्रोडक्ट और बेचे उनको। The third way is to increase the frequency in which your customers order from you. और उसके बाद है जो कस्टमर जो आपको रीपर्चेस करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना।
And then the fourth way is to maintain happy, loyal customers. और उसके बाद आपके जो कस्टमर है वो आपसे खुश हो, आपको चेष्टा करना चाहिए. For much of my career, I've seen people sell products and then not even follow up with their customers. मैंने देखा मेरे करियर में बहुत लोगों ने प्रोडक्ट बेचा है पर फॉलो अप नहीं करते कस्टमर के साथ. Not only are they not trying to sell more products, but they're not even following up to have repeat sales. वो ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे हैं और रिपीट सेल का भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं. Now, how to acquire new customers? कैसे नए कस्टमर हम लोग पाते हैं? Start by making a list of everyone you know. पहला आपको लिस्ट बनाना है सब लोगों का जो लोग जिनको आप जानते हो. Put a B for business next to those that you want to approach on the business. बी लिखिए उसके आगे अगर उसको बिजनेस के साथ अप्रोच करोगे तो. Put a P for product next to those that you want to approach on the product. पी लिखिए उसके नाम के अगेंस्ट में अगर प्रोडक्ट से उनको अप्रोच करोगे तो. Now, let's talk about the ways of retailing products that will result in the highest conversion rate. किस तरह से हम लोग रिटेलिंग में जाते हैं और सबसे ज्यादा कन्वर्शन करते हैं. There's no better way to increase your conversion rate when selling products than meeting face to face with people. सबसे अच्छा कन्वर्शन होगा आपका फेस टू फेस जब आप जाओगे. Yeah, when you're meeting face to face with somebody, you have their undivided attention. जब आप फेस टू फेस जाओगे तो आपको बहुत अच्छा अटेंशन मिलता है. They're not distracted. उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है. You can build that relationship. और एक अच्छा रिलेशन बनता है. And if you have a relationship with somebody, they're more likely to buy from you. और अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप होगा तो बहुत चांस बढ़ता है कि आपसे वो खरीदेंगे सामान. You can read their body language उनका बॉडी लैंग्वेज भी आप देख सकते हो. and adjust what you're saying based upon their body और बॉडी language. लैंग्वेज को देख के अपने बातचीत को एडजस्ट कर सकते हो. If I'm sitting down and I'm presenting as an example the business to somebody and they're nodding their head, I might go a little faster. अगर मैं किसी को मैं दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ और अगर वो अपने सर को हिलाता है तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा. If they're looking like, I might stop and then speak slower and be more clear. अगर वो थोड़ा ऐसा सोच के हमारे ऊपर देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, उनके साथ बातचीत स्लो करूंगा थोड़ा सा. If they've got their arms crossed and they don't appear to have any interest, I'm going to stop. अगर वो इस तरह बैठे हैं और कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं बात करना बंद कर दूंगा. If somebody doesn't have an interest in what I'm saying, I don't want to continue to talk. अगर कोई मेरे बातचीत को इंटरेस्ट में नहीं सुन रहा है तो मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा. और So there's a lot of benefits that come from meeting face to face with somebody. तो बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप फेस टू फेस किसी के पास पहुंचते हो तो. What's the second best way? दूसरा वाला क्या हो सकता है? Who remembers from this morning? Video conferencing would be the second best way. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूसरा अच्छा बेस्ट होगा. So rather than talking to them over the phone, you might just say, hey, let's just do a quick video and I'd like to talk to you about whatever product it is that you want to talk about. अगर आप फोन में नहीं बात करते तो बोल सकते हैं हम लोग चलिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं. The third way is through the phone. और तीसरा है फोन में. Now, when it comes around to selling products, you can send personalized messages to see if somebody might have an interest. प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर काम करते हो तो आप पर्सनल मैसेज भेज नहीं सकते हैं ये पूछने के लिए कि आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो क्या. So let's assume I have a friend who's a diabetic. अज्यूम करते हैं मेरे एक दोस्त है जिनको डायबिटीज है. I could send my friend a message and I would say, hi Chandra, the company I'm working with markets the number one clinically proven product in the world to help lower blood sugar. और मैं चंद्रा मेरा दोस्त है उनको मैसेज करता हूं कि मेरा कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है डायबिटीज के ऊपर जो शुगर को कंट्रोल करता है. When would you have a minute so that I could have a brief discussion and tell you about this product? कब तुम्हारे पास समय होगा 1 मिनट का जब मैं आके आपसे बात कर सकता हूं. Now, personalized message means I include their name in the message. पर्सनलाइज्ड मैसेज का मतलब है उनके नाम को लेके मैं करूंगा मैसेज. Now, here's some ways that are less effective. और ये ऐसा है चीज जो इफेक्टिव नहीं होता है. ये A group message where you send a message to a group of people. ये ग्रुप मैसेज इफेक्टिव नहीं होता है. Let me give you an example of something that just happened recently in my life. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं मेरे लाइफ में जो एग्जांपल हुआ अभी थोड़े दिन पहले. My wife travels to Africa a lot. मेरा वाइफ अफ्रीका बहुत जाती है. And right now she's raising money for the refugees from Sudan, the children who have been forced from their homes and who are staying in refugee camps. अभी वो सूडान में है और रेफ्यूजी लोगों के लिए घर का व्यवस्था कर रही है वहाँ. So I sent a message to all my friends I play tennis with.
और मैंने क्या किया, मेरे दोस्तों को मैसेज किया जिनके साथ मैं टेनिस खेलता हूं, So I said, "Hi, tennis friends." और मैंने बोला हाय टेनिस फ्रेंड्स. And then I had my message. उसके बाद मैंने लिखा अपना मैसेज. Out of about 40 tennis friends, only about 4 or 5 responded to that group message. 40 लोगों में सिर्फ 4 या 5 लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया. And then I took a couple days and I followed up with them individually. कुछ दिनों के बाद मैं उनको अकेले में बात किया. And then in that case, I said, "Santush, my wife is holding a special fundraising event to raise money for the children from South Sudan. We'd love for you to come to our party. Would you be open to joining us?" और फिर मैंने बोला, संतोष, मेरा वाइफ सूडान में है और वो रेफ्यूजी लोगों का घर के लिए काम कर रही है, डोनेशन इकट्ठा कर रही है, तुम मेरे घर में आओगे क्या मिलने के लिए? 100% of them responded. और 100% लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया उस समय. 100%. 100% ने हमको रिस्पॉन्ड किया. So I went from, thank you. So I went from 10% sending a group message to 100% by sending a personalized invitation. तो ग्रुप मैसेज में मेरे को मिला था 10% का रिस्पॉन्ड, और जब मैंने पर्सनलाइज्ड वे में किया है तो मेरे को 100% मिला रिस्पॉन्स. And then you want to know the least effective way? और अभी आपको जानना सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा हो सकता है? It's what you know so many of your friends are doing. वो आप जानते हो शायद. Yeah. They're putting posts on their social media sites. सोशल मीडिया में उन लोग पोस्ट कर रहे हैं ये सब लोग. Friends, that doesn't work. ये काम नहीं करता. It does not work. ये एकदम काम नहीं करता. You're going to go from maybe a 80 or 90% success rate if you're sending a personalized message to like a 1% success rate by sending a social media message. ये आपको 80% से 1% तक ले जाएगा अगर आप इस काम को करते हो. And even worse, you end up blowing all your contacts. और क्या है, आपका सारा कंटेंट्स के बारे में सब बोल ही देते हो वहां में. One of the things that I teach my new people when I bring them in the business is don't post anything about what we're doing on your social media sites. नए लोगों को जब मैं लाता हूँ बिजनेस में, मैं बोलता हूँ उनको, सिखाता हूँ कि तुम अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ पोस्ट मत करना. Because I don't want them blowing all their leads. मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ वो बोल दे वहां में फेसबुक में. I'm going to teach them how to build the business the right way, not the wrong way. मैं ये सिखाना चाहता हूँ बिजनेस को सही तरह से कैसे बनाया जा सकता है. So what should you do when introducing the products? तो अभी क्या करना चाहिए जब आप प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हो? The first thing is to determine if the person that you're talking to has a need or desire for the benefits that our business offers or our products offer. सबसे पहले आपको ये खोज करना पड़ेगा उनके पास जरूरत है कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए या यूज करने के लिए. This morning when I was talking about how to be a master recruiter, it was the same thing. You would ask questions to determine if there's a need or desire for what our business can offer them. सुबह मैं जो आपसे बात किया था मास्टर रिक्रूटर के बारे में, वहां भी मैंने वही पूछा, बोला था कि अगर नीड या उनको इंटरेस्ट है कि नहीं पूछने के लिए. And if your goal is to sell the products, your goal is to identify a need or desire your person has for our products. और अगर हमें प्रोडक्ट्स को बेचना है तो आपको हमें उनका नीड है या डिजायर है कि नहीं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. And not only does this help you deliver a more effective message, but if somebody openly identifies that they have a need for the product that you're going to discuss, it's hard for them to say at the end of the presentation that they're not interested. तो अगर आपको मालूम चल जाता है कि उसके अंदर एक नीड है, डिजायर है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसको बहुत मुश्किल होगा ना बोलने के लिए आपको. If I've identified somebody who has high blood sugar and I talk to them about slim or balanced, they can't tell me when I'm done, well, I really don't need that product. अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं किसी को कि उसके अंदर शुगर का प्रॉब्लम है और मैं अपने प्रेजेंटेशन को दिखाता हूं, प्रेजेंटेशन के बाद उसको ना बोलने में मुश्किल होगा. Then next, after you've identified the need or desire they have, you provide a brief overview of Unicity. जब नीड और डिजायर आपको मालूम चल जाता है तो यूनिसिटी के ऊपर आपको कुछ बोलना पड़ता है. The company I work with is the world's leading metabolic healthcare company. जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, ये दुनिया का लीडिंग मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी है. They spend millions of dollars on clinical studies. ये कंपनी लाखों करोड़ रुपया खर्चा करता है. They have 17 products in the physician's desk reference guide. इनके पास 17 प्रोडक्ट्स है फिजिशियन डेस्क रेफरेंस गाइड बुक में. More than any other company in the entire nutrition industry. न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी, उनसे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पीडीआर में हैं. This product that I'm going to talk to you about now is clinically proven.
मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करूंगा अभी वो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, it's safe and effective, ये सेफ है और वेरी इफेक्टिव है, and most importantly, it works. और ये सबसे बड़ा चीज ये काम करता है. And if you're not impressed, I'll give your money back. और अगर आप इंप्रेस नहीं हुए तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा. See that confidence? अभी देख रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस कैसे लग रहा है. People pick up on your confidence. लोग आपके कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं. If you're just talking like this, how confident are they going to be? तो अगर आप इस तरह से बात करते हो जैसे उन्हें दिखाया है तो क्या हो सकता है. But if you look them in the eyes and say, hey, this product right here, there is no product like it in the world. और अगर आप उनके आंखों में देख के बात करते हो कि ये प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हो दुनिया में किसी के पास है नहीं ये प्रोडक्ट. Then you describe the benefits of the product. इसके बाद आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बोलते हो. All a person wants to know are the benefits of a product. लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में ही जानना चाहते हैं. If I'm going to go buy a tire for my motor scooter down on the street, all I want to know are the benefits of the tire. I don't care how the tire's made. अगर मेरे मोटरसाइकिल के लिए मेरे को टायर चाहिए तो मेरे को सिर्फ टायर का बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहिए बस. I don't care about what temperature they molded the rubber at. मेरे को ये नहीं जानना वो रबर कितने टेम्परेचर में उन्होंने बनाया होगा. If that tire is being made by the world's leading tire manufacturer, that's good enough for me. अगर वो टायर सबसे दुनिया का सबसे लीडिंग टायर मैन्युफैक्चर बनाया है वो ठीक है, कोई बात नहीं. And that's why you give the brief overview on Unicity. इसीलिए आपको यूनिसिटी के बारे में थोड़ा बोलना चाहिए. That brief overview I just shared with you gives you credibility before talking about any other product. ये आपको देता है क्रेडिबिलिटी ताकि आप जो बात करेंगे उसके बाद लोग आपको सुनेंगे. And then after you're done, you say, based upon what I've shared with you, can you see the benefits of what this product can offer you? आपके बातचीत के बाद आप पूछ सकते हो मैंने जो दिखाया आपको अभी आप कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में और जानना चाहोगे या लेना चाहोगे. Is there anything about this product that I've not shared with you that you feel would be important for you to know? ऐसा कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में मैंने आपको बोला नहीं है और आपको जानना है. They say, no, that's pretty impressive. वो बोल सकते नहीं मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया है. And then I would say, would you like to start using it? और मैं फिर पूछूंगा कि आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स. And understand it comes with a full money back guarantee. और फिर हमारा ये मनी बैक गारंटी भी है. Now, for all of you in the room, just so you know, if you buy products from Unicity, you have a 40-day period of time you can return those products. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है आपको 40 डेज के बाद आप प्रोडक्ट वापस भी कर सकते हो. So if I retail the product to somebody and they're not happy, I can take the product back, give them a full refund, and then as long as at least 50% of the product has not been used, I can return it to Unicity and get a replacement. अगर हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कोई खुश नहीं है तो मैं उनको 40 दिन के अंदर वापस भी ले सकता हूँ अगर उसके अंदर 50% प्रोडक्ट्स बाकी है तो. And so if you speak with confidence like this, people are going to be like, yeah, I'll try it. तो अगर आप इस तरह के बात करते हो तो लोग आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए रेडी होंगे. So after you determine interest, you ask for a decision. So आपको इंटरेस्ट जानने के बाद उनसे पूछिए आप क्या लेंगे इसको. So what are other ways to build a successful large retail business? अभी दूसरा और तरीका क्या है कि एक बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस करने का. Here's the number one way I've sold product over the years. ये है एक नंबर 1 वे जिस तरह से मैंने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचा है. You see, I'm always somebody who is led with the business. मैंने हमेशा बिजनेस को आगे रख के मैंने लीड किया बिजनेस. And when you lead with the business and you're turning the pages and you're explaining what we do, you cover the products, right? जब हम लोग हमारे बिजनेस के बारे में दिखाते हैं और पेज घुमाते हैं तो हम लोग शायद प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ बोलते हैं. So when I'm done introducing the business to somebody, if they choose not to join me in the business, I say, would you at least like to use the products? तो जब मैं बिजनेस के बारे में दिखाता हूं और वो हमारे बिजनेस को लेके इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उनको पूछता हूं क्या आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो. I've had very, very few people in 27 years who've declined me on the business that have said they don't want to even use the product. बहुत कम लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्होंने बिजनेस को डिक्लाइन किया है पर प्रोडक्ट्स को नहीं लिया उन्होंने. My first month when I sponsored 20 people, I had a lot that said no. I sold over 4,000 points worth of product my first month to the people who told me no to the business. मेरे पहले महीने में जब मैंने 20 लोगों को स्पॉन्सर किया था मैंने उस महीने बहुत लोगों ने मेरे को नो भी बोला. नो बोलने वालों को मैंने 4,000 के पॉइंट्स का प्रोडक्ट बेचा. Yeah, my first month I introduced it to 68 people, the business. पहले महीने में मैंने 68 लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस को. 20 joined. 20 लोगों ने ज्वाइन किया. And 48 other people, most of which bought some products. और 48 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा. You see how I know my numbers?
Do you see how I know my numbers? देखो मेरे नंबर के बारे में कितना जानता हूं, Because I track my numbers. मैं अपने नंबर को ट्रैक रखता हूं। Because that's the only way I can improve is by knowing my numbers. इसी तरह ही हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग हमारे नंबर को जानते हैं। Now you can think, well, I think my numbers are improving, but I'm not sure. आप सोच सकते हो हाँ मेरा नंबर इंप्रूव हो सकता हो रहा होगा शायद। And when you really dial it in and you're really refined, it will be really hard to tell from one month to the next if your numbers are better if you're not measuring them. अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो तो आप एक महीने से दूसरे महीने तक कैसे परफॉर्म कर रहे हो आपको नहीं होगा जानकारी। Now, if you're having horrible results and all of a sudden you start to have good results, you'll notice an improvement. अगर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट खूब खराब रिजल्ट हो रहा है और सडनली आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आपको जानोगे कि आपको आप में कुछ डिफरेंस हो रहा है। But when you start refining and making those small little improvements, you have to know your numbers. बट जब आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो तो आपको नंबर के बारे में भी थोड़ा सा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। Another way to sell products is to take them in public. और दूसरा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप पब्लिकली उसको थोड़ा सा लाइए, आगे लाइए, पब्लिक के आगे। You wouldn't realize how many people over 27 years when I'm mixing up some balance in my water say, "What is that?" आपको मालूम है कि 27 सालों में जब मैं पानी में अपने बैलेंस को मिक्स करता हूं बहुत लोग मेरे को पूछते हैं ये है क्या। In fact, the joke on the tennis courts is, "What is that green stuff you're always drinking?" वो टेनिस कोर्ट में जहां टेनिस खेलता हूं सब पूछते हैं वो ग्रीन चीज क्या है जो आप रोज पीते हो। Yeah, because people notice if I'm drinking something green, लोग जानते हैं ये ग्रीन चीज है, and then they go, "What is it?" फिर पूछते हैं ये है क्या। What a great opening. ये बहुत अच्छा शुरुआत है। What is it? क्या है ये। So take the product in public. और हमारे इसीलिए बोल रहे प्रोडक्ट्स को पब्लिक के पास ले जाइए। If you're going out to dinner, don't take your balance or your slim before you leave the house. Take it in the restaurant just before you eat. अगर आप खाने को जा रहे हैं, रात को खाने को जा रहे हैं, बैलेंस और स्लिम साथ में ले जाइए उसको। And anytime you're out with people in your organization, you have to take balance or slim before your meal. और जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाहर जा रहे हो तो आप ये बैलेंस और स्लिम अपने साथ रखिए और उनके सामने खाइए। You are the example. आप एक एग्जाम्पल है। If they're having a meal with you and you're not taking the product, they notice. आपके डाउनलाइन अगर आपके साथ खा रहे हैं और आपने प्रोडक्ट नहीं खाया तो उन्होंने आपको नोटिस भी किया है। They're like, वो सोच रहे हैं क्या बात है ये। But if they're taking the product, you know what that teaches you? That when you're out with your people, you better take it too. अगर वो ले रहे हैं तो आपको वो दिखा रहे हैं कि आपको भी लेना चाहिए। So much of what your people will learn from you has nothing to do with what comes out of your mouth. बहुत चीज लोग आपको देख देख के ही सीखेंगे, आपको मुंह से भी नहीं बोलना। It's teaching through your example. अपने एग्जाम्पल से सिखाना उसका मतलब। Just like how timely you are in returning an email, they notice. जिस तरह आप अब उनके ईमेल को सही समय में रिप्लाई करते हो वो भी उनको खबर होता है। If it takes you 4 or 5 days to return an email, they notice. अगर आप 4-5 दिन लगाते हो एक ईमेल को वापस रिप्लाई करने के लिए वो भी उनको मालूम चलता है। And then you're teaching them through your example that returning emails in a timely manner is not important. और जब आप 4-5 दिन के बाद ईमेल को रिप्लाई करते हो वो आप सिखा रहे हो अगले को कि ईमेल को देरी से रिप्लाई करना चाहिए। If you get on phone calls with their prospects and your energy's high and you're always happy, you know what you're teaching them? That when they get on the phone with their downlines prospects, that they need to be high in energy and be happy. जब आपने डाउनलाइंस के फोन के जब आप बात करते हो एनर्जी के साथ बात करते हो तो क्या सिखा रहे हो आप? आपके डाउनलाइंस ये सीख रहा है कि जब हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसा होना चाहिए एनर्जी। Number 3 is to give samples. और उसके बाद सैंपल देना चाहिए आपको। One of the great things about India is that most of the products come in little sachets. सबसे बड़ा चीज इंडिया में ये है कि आपको सैचे में हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। Yeah, you should be giving out samples of our products. और ये सैचे को आप सैंपल हिसाब से दे सकते हो दूसरों को। Now, what are other ways to build a retail business? और क्या हो सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए? Brand yourself by the people that aware of you through social media and just by people who see you around that you take pride in your health and fitness. अपने आप को ऐसा ब्रांड बनाओ जो लोग आपसे मिलते हैं या देखते हैं आपको कि आप हेल्थ और फिटनेस के साथ जुड़े हो। Yeah, you'll have a lot more credibility if people view you as somebody who values your own health and fitness than if you don't. आपको ये चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा जब आप लोग समझेंगे कि आप
हेल्थ और फिटनेस में बहुत इंपॉर्टेंस देते हो. Yeah, I had a guy on the tennis court the last time I play because I branded myself as somebody who takes pride in how I look and feel, who started talking to me and asking me questions about some of the products that we sell. टेनिस कोर्ट में मेरा एक दोस्त है जिसको मेरे बारे में मालूम है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखता हूं. उसने मेरे को पूछा मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हो. And I've been playing tennis with him for 5 years. और मैं 5 साल से खेल रहा हूं टेनिस इसके साथ. So it's not about what you sell today or who you recruit today. It's about building a brand so when it's the right time in their life, they look at you as an authority. इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो अभी. बात है आप किस तरह के ब्रांड हो और क्या सही वक्त में वो आपको उसके बारे में पूछेगा अभी. And this is why it's so important that all of you take pride in how you look and working hard on your health and fitness, because we are in a health and fitness company. इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना है. आप कैसे दिखते हो, आपका हेल्थ कैसा है, आपका फिटनेस कैसा है, बिकॉज हम लोग एक हेल्थ केयर कंपनी में हैं. Yeah, become a walking billboard. आप एक चलता फिरता एडवर्टाइजिंग बोर्ड हो. Yeah, see, I can stand up here with credibility when I talk about a health and fitness company because I look like I take pride in my health and fitness. मैं यहाँ खड़ा होकर जब बात करता हूँ तो सही में लगता है कि मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ. Another way to build a retail business is to ask for referrals. और दूसरा है आप रेफरल के बारे में भी पूछ सकते हो. When you sell products to people that have a positive response from those products, you can say, who do you know that could also use the same product? जब आप किसी को बेचते हो हमारे प्रोडक्ट्स और उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उनसे पूछ सकते हो और कौन है आपके साथ जान पहचाने लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड कर सकते हो. You could also say, would you have an interest in being in our business so that you can share these same products with those you know? या आप ऐसे ये कर सकते हो, क्या आप हमारे बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हो क्या. Right now in the United States, we're doing a lot to help people lose weight. अभी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के वेट को लूज करने के लिए. And when people lose weight, everybody notices. और जब वेट लूज करता है कोई, सब लोगों का नजर जाता है उसमें. And so when somebody loses 10 kgs over a month and a half or 2 months, everybody's noticing. जब कोई 10 किलो 1 या 2 महीने के अंदर लूज करता है तो सब लोग नोटिस करता है इसके बारे में. And then I say to those people, would you have an interest in helping your friends lose weight the same way I've helped you? और जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज करके वेट लूज किया तो उनको पूछता हूं कि आपके पास कोई दोस्त है जो आपकी तरह वेट लॉस करना मांगता है. You can make money by just sharing with them what you've done to lose weight. आप जस्ट पैसा कर सकते हो शेयरिंग के साथ. See how that works? Be creative. What other ways can you think of that will allow you to build a large and growing customer base? आपको थोड़ा क्रिएटिव और होना पड़ेगा कि और क्या क्या तरीका हो सकता है कि आपको ज्यादा कस्टमर मिले. So, 4 ways to build a business. What's number 1? पहला वाला क्या है? Acquire new customers. And yes, face-to-face is the best way to acquire new customers. हाँ, फेस टू फेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नए कस्टमर को लाने के लिए. What's the second way to build a successful business? दूसरा तरीका क्या है? Increase the size of orders placed by your customers. ऑर्डर के साइज को बड़ा करना है. So let's talk about how to do that. कैसे करता है हम लोग ऑर्डर के साइज को बड़े? Number 1 is to ask questions about their health. पहला है उनके हेल्थ के ऊपर प्रश्न पूछना है आपको. Let's assume you're selling super chlorophyll to someone. उदाहरण के लिए आप सुपर क्लोरोफिल बेच रहे हो किसी को. You can ask them a question, and that is, are there any health challenges that you're having? उनको आप पूछ सकते हो प्रश्न कि क्या आपके पास हेल्थ चैलेंज है. And then listen. और सुनिए उसको. They tell you one. कुछ बोल रहे हैं वो. Any others? और कुछ है क्या? Yeah, so don't stop at the first one. They might have 5. हाँ, पहला प्रॉब्लम में स्टॉप मत कीजिए, उनके पास शायद 5 प्रॉब्लम हो सकता है. And as you learn more about the health challenges they have, you can determine if we've got products that can help them. और जैसे ही आप समझोगे कि उनको एक नहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उनको दूसरे प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं. In the United States, again, we're marketing our health and fitness opportunity as a way to lose weight, but there's a lot of people who want to lose weight who are also diabetic.
हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग वेट लॉस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पर उनमें से भी बहुत लोग हैं जिनके पास शुगर का भी प्रॉब्लम है. We sell Lean Complete. उनको हम लोग देते हैं लीन कंप्लीट. And all of a sudden now I'm talking to somebody who has high blood sugar. Now I'm going to suggest our balance product to that person. जिनके पास हाई ब्लड शुगर है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा बैलेंस के बारे में. And you wouldn't believe how many people that are thin that have high blood sugar that you could assume don't have high blood sugar that do. आप ऐसे भी नहीं है, बहुत पतले पतले लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है. And you wouldn't know if you didn't ask. और अगर नहीं पूछोगे आपको मालूम नहीं चलेगा. The other night we sat down with a person who had blood sugars in the 400s, and I would never have guessed he had blood sugars in the 400s. कल रात को हमने किसी से साथ बैठा था और उसको देखने के बाद उसने बोला उसके पास शुगर था 400, पर उनको देखने के बाद मालूम नहीं चलता हमको. This would be a great thing to do even when presenting the business. Before you dive into the products, you can say, are you suffering from any health challenges? ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा हो सकता है. प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोग पूछ सकते हैं कि आपके अंदर कुछ हेल्थ का चैलेंज है क्या. Then when you talk about a product that can help with that health challenge, you can put more emphasis on that product. और उसके बाद जो प्रोडक्ट उनको चाहिए उसके बारे में आप बोल सकते हो और हमारे प्रोडक्ट के बारे में और कुछ उनको पूछ भी सकते हैं वो. And then if they're not interested in the business, you can always come back to that product that you know can help them. और अगर ऐसा भी हो सकता है बिजनेस के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तब आप वापस जा सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर और प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बोल सकते हो. Number 2 is just suggest additional products. उसके बाद आप एडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बोल सकते हो. So as an example, in the United States, we're focused on helping people lose weight. जैसे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग फोकस्ड हैं वेट लॉस के ऊपर. And if I'm talking to somebody who needs to lose weight, I will suggest the Clear Start so that they can reset their body by cleansing it. और अगर मेरे को स्टार्ट करने के लिए मैं उनको क्लियर स्टार्ट बोलूं तो ये इसीलिए बोलूं क्योंकि क्लियर स्टार्ट लेने के बाद उनके बॉडी को वो टॉक्सिन उनके अंदर से बाहर आ जाता है. It has nothing to do with the health challenge they may have. इसके साथ हेल्थ का चैलेंज कुछ भी नहीं हो सकता. See, I believe that everybody should have a Clear Start. मैं बिलीव करता हूं कि हम में से सभी लोगों को क्लियर स्टार्ट खाना चाहिए. So I suggest for anybody who wants to improve their health to start by doing a cleanse. तो कोई भी आदमी अपने हेल्थ को अगर ठीक रखना चाहिए तो स्टार्ट करना चाहिए उनको क्लियर स्टार्ट के साथ. So many people feel a lot better after going through the 30-day cleanse. बहुत लोग हैं हमारे बीच में 30 दिन का क्लियर स्टार्ट कोर्स करने के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं. I also suggest for everybody who wants to lose weight to either use matcha or Unicity that we sell in the United States. और जो भी हमारे Matcha or Unicity. With people who want to lose weight. जो लोग हमारे लूज वेट करना चाहते हैं माचा और यूनिमाटे भी यूज कर सकते हैं साथ में. So you can just suggest additional products even if they don't address a specific health concern the person has. तो हमारे एडिशनल प्रोडक्ट्स भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं अगर उनके डायरेक्टली उनके हेल्थ चैलेंज के साथ लिंक नहीं हो तो भी. No different than buying a new tire for your scooter and the person suggests, hey, would you like to buy a new helmet? जैसे आपके स्कूटर के लिए आपने टायर भी खरीदा और उसने आपको हेलमेट भी दे दिया एक. Yeah, or we got a really great deal on oil for your motorcycle right now. और ऐसे हो सकता है वो तेल भी दे देगा आपको साथ में. Yeah, just suggesting things. Worst case scenario, they're not interested. वर्ड्स क्या हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. Number 3 is give away samples. उसके बाद है सैंपल देना. So I'm selling product to somebody. I'm going to give them some samples of other products to try. जब मैंने उनको एक प्रोडक्ट बेचा तो मैं उनको दूसरे प्रोडक्ट्स के सैंपल भी दे दूंगा कुछ. Then when I follow up with them to see how they like the product they bought, I'm going to say, have you tried the samples I gave you? तब जब मैं उनको फॉलो अप करूंगा कि मैंने जो प्रोडक्ट दिया आप वो खा रहे हो कि नहीं, उसके बाद पूछूंगा मैंने जो सैंपल दिया था उसको भी खाया क्या नहीं है. And number 4 is be creative in considering how you can sell each customer additional products. और इसके ऊपर आप काम की थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए कि एक कस्टमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं आप. You see, what they've learned in the United States is when you sell additional products to somebody, it's all profit because you're already doing business with them and it's all bonus. जब आप लोगों को एडिशनल प्रोडक्ट्स देते हो तो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बिकॉज आप ज्यादा सामान बेच रहे हो उनको. See, in the United States, all the fast food restaurants have drive-thrus. यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है वहां में ड्राई फ्रूट्स रहते हैं. And when you go through a drive-thru in the United States and you order something, they always ask you,
Would you like to try this dessert, or would you like to have a soda with your sandwich? जब भी आप इस जगह में जाते हो तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आप डेजर्ट्स खाना चाहोगे या सैंडविच खाना चाहोगे. Why do they do it? क्यों करते हैं ये? Because it's pure profit for those companies. That person is already in their drive-through, and if you can sell them something else, it's pure profit. क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है, उन्होंने हमारे साथ सामान तो खरीद ही दिया है, साथ में हम लोग और कुछ भी दे सकते हैं उनको. And it works, otherwise they wouldn't be doing it. और अगर ये काम नहीं करता तो वो नहीं करते ऐसा काम. You see, when I go through a drive-through, I generally always get water. मैं जब जाता हूँ मेरे को हमेशा मैं एक ऑर्डर देता ही हूँ. It's been years since I had a soda, सालों हो गए मैंने सोडा पिए. because soda's bad for you. सोडा अच्छा नहीं है. So I will order my sandwich, मैं अपना सैंडविच ऑर्डर करूंगा and then they always ask me, would you like to have a soda with that? और फिर वो पूछेंगे आप क्या सोडा भी खाओगे इसके साथ. And I say, no, I'll just have a cup of water. मैं बोलूंगा नहीं, मैं एक गिलास पानी पीऊंगा. And then they say, well, would you like to have X dessert with this? आप उसके साथ क्या कुछ खाओगे, डेजर्ट्स खाओगे क्या? And I say, no, I'll just have my sandwich and water. मैं बोलता नहीं, मैं सैंडविच और पानी पीऊंगा. Now, generally, I don't even go through drive-thrus, but when I do, they're always trying to sell me something extra. जब भी मैं जाता हूँ वो हमेशा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं. When I'm going into a clothing store to buy a tie, they're wanting to see if I want to buy a shirt too. जब मैं टाई खरीदने के जाता हूँ टाई की दुकान में वो पूछते हैं कि आप शर्ट भी लेना है आपको. When I'm trying to buy a pair of shoes, they're trying to sell me socks. जब मैं जूता खरीदने जाता हूँ तो मेरे को सॉक्स बेचते हैं उन लोग. Yeah, this is how businesses work that are well run. ऐसे ही अच्छे बिजनेस को लोग चलाते हैं. And so for your business organization, you want to have all your people suggesting additional products, because by just doing that, your distributors can double their income on the same तो customer. आपके बिजनेस में भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वो एडिशनल प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ले सकते हैं. So the 4 ways to build a successful retail business. Number 1 is. पहला क्या है? Number 2, increase the size order placed. Number 3, increase the frequency. So let's talk about frequency. अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं. Number 1, thank them for their business. उनको थैंक्स कीजिए कि आपके साथ उन्होंने बिजनेस किया. I had an insurance agent that every time I talked to him, he said, Todd, I just want to thank you for your business. मेरा एक इंश्योरेंस एजेंट है, जब भी मैं उससे बात करता था वो अगर टॉट मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ. For years, सालों साल वो ऐसे ही बोलता था. every time I talked to him, before we'd hang up the phone, he said, Todd, I just want you to know I am grateful for your business. हमेशा वो मेरे को बोलता था कि टॉड मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके बहुत ग्रेटफुल हूँ. He recently died. वो कुछ दिन पहले मर गए. And you know what I thought? मैंने क्या सोचा मालूम आपको? He's the only person I've ever done business with out of the millions of dollars that I've spent that thanks me every time I talk to him. ये एक ही आदमी था जिनके साथ मैंने बिजनेस किया. मैंने बहुतों को शेयर किया पर ये एक ही आदमी था जो हमेशा मेरे को थैंक यू बोलता. And I had a lot of insurance agents over the years, including people I played tennis with, that wanted my business. मेरे पास बहुत इंश्योरेंस एजेंट थे, साथ मेरे टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स भी थे मेरे साथ, बट उन्होंने भी हमको मांगा था बिजनेस. But I would never think in a million years of taking my business away from him, because he's the only person who thanked me every time I talked to him. बट मैंने हमेशा उसी को दिया बिजनेस जो मेरे को हमेशा थैंक यू बोलता था. And not only did I give him insurance business, but I gave him other business because he was so grateful for the business I gave him. सिर्फ मैंने उसको इंश्योरेंस का ही नहीं दिया बिजनेस, मैंने उसको बहुत कुछ दिया बिजनेस. So if you're thanking people when it's time to reorder, they're much more inclined to reorder than if you're not grateful for their business. अगर आप एक आदमी को थैंक यू करते हो, ग्रेटफुल बनते हो, तो चांसेस बनता है कि आपको वो रीऑर्डर प्लेस करेगा. When you sell product to someone, you want to follow up with them the next day to see how they're enjoying the product. जब आप किसी को प्रोडक्ट बेचते हो उनके साथ फॉलो अप करना है नेक्स्ट डे कि हमारे प्रोडक्ट्स को लेके वो उनका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है. And it doesn't necessarily need to be a phone call. मे बी ये फोन कॉल भी नहीं हो सकता. It could be a personalized message. एक मैसेज भी हो सकता है. Hey Santosh, I just wanted to follow up with you today to see how you're enjoying Slim. संतोष कैसे हो, मैं सिर्फ फॉलो अप करना चाहता हूँ कि तुमको स्लिम खा के कैसा लग रहा है. You know the number one reason I do this? आपको मालूम है मैं ये क्यों करता हूँ? Because when I follow up with Santosh, he hasn't had any yet.
बिकॉज जब मैं फॉलो अप करता हूँ संतोष को, उसने खाया ही नहीं होगा. So many times the customer takes the product home, they put it on the shelf, and then they don't take it right away. बहुत बार कस्टमर ले जाते हैं हमसे, पर वो खाते नहीं, उसको शेल्फ में रख देते हैं उसको. And now he's thinking, before I respond to Todd, I better mix up a packet and take it so I can tell him. अभी संतोष सोच रहा है टॉड को रिस्पॉन्ड करने से पहले शायद पी लो पहले, उसके बाद मैं वो करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ. Yeah, I want him to get started using it right away. मैं चाहता था कि उसको मैं स्टार्ट करूँ, इसीलिए. Because if you sell somebody a 30-day supply of something, increase in frequency means that you want them to have a reorder on day 31. अगर आप किसी को 30 दिन का सप्लाई देते हो और बीच बीच में उनको बातचीत करते रहते हो, आपका मेन इंटेंशन है कि आपको रीऑर्डर आना चाहिए जल्दी से जल्दी 30 दिन से पहले. You don't want somebody to run out of product and then you follow up with them then, and then there's a gap in between of the time they ran out to the time their next order starts. ऐसा नहीं होना चाहिए उनके पास स्टॉक खत्म हो गया और आप उनको दे नहीं पा रहे हो. Yeah, because a 1 week is 1 week's lost sales. एक सप्ताह अगर उन्होंने आपको ऑर्डर नहीं किया तो एक सप्ताह आपका लॉस है, आपको सेल नहीं हो रहा एक सप्ताह का. And then follow up weekly. If I sold Santush some Slim, I'm going to follow up with them the next week and say, Santush, how have you enjoyed Slim this last week? अगर मैंने संतोष स्लिम दिया होगा तो मैं उसको वीकली फॉलो अप करूंगा और पूछूंगा लास्ट वीक का सैंपल आपने खाया कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है. Have you had any questions? आपका कुछ प्रश्न है क्या पूछने के लिए? No, Todd, it's been great. I've been enjoying using it. नहीं टॉड, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ. Santush, thank you so much for your business. संतोष थैंक यू, तुमने मेरे साथ बिजनेस किया. Be intentional about doing the little things that build relationships. इंटेंशन के साथ वो छोटी छोटी बात कीजिए जो आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेगा बिजनेस में. If you're showing an interest in people and you're building a relationship with them, they are much more likely to reorder from you than somebody that you're not showing any interest in or building a relationship. अगर आप जिससे काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उनके साथ आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, बहुत चांस बनता है कि आपके साथ वो बिजनेस में बना रहेगा. And then number 5 is ask for their next order when they should be running low. और जैसे ही उनके प्रोडक्ट्स में कमी आ जाता है, उनका नेक्स्ट ऑर्डर को प्लेस करने के लिए उनसे पूछिए. If I sold Santush a 30-day supply of Slim, I'm following up with him on day 21 when there's about 9 more days left and saying, how are you enjoying the product? अगर मैंने संतोष को 30 दिन का सप्लाई दिया तो मैंने 21 डेज में ही उनको मैं कॉल करना शुरू करूंगा कि तुम्हारे पास स्टॉक खत्म होने वाला है अभी. He says, it's great, Todd, I'm enjoying it. वो बोलेगा हाँ मेरे पास है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ. I say, you have 9 days left. Would you have an interest in reordering? आपके पास सिर्फ 9 दिन बाकी है, कि आप इसको रीऑर्डर करोगे अभी? Or maybe better, rather than saying, would you have an interest in reordering, I'd say it's time now to place your next order. Are you ready? ये ऐसे पूछ सकता हूँ कि आपको अभी रीऑर्डर करना है क्या, बिकॉज़ समय हो चुका है. 4 ways of building a successful business. What's number 1? What's number 2? What's number 3? And what's number 4? Yes. Embed this in your mind. This is important. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी. So let's talk about how to maintain happy customers. अभी कैसे हम लोग एक हैप्पी कस्टमर को मेंटेन रखते हैं. Now, obviously, many of the things I've shared already would be ways of maintaining happy मैंने customers. अभी तक जो चीज बोला है, शायद यही भी आपको एक हैप्पी कस्टमर देगा. So, number 1, thank them for their business. सबसे पहला उनको थैंक्स दीजिए बिजनेस के लिए. There's 2 different ways of saying thank you. 2 तरीका है थैंक यू बोलने का. Thank you for your business. थैंक यू फॉर योर बिजनेस बोल सकते हैं आप. Or, Chandra, I just wanted to thank you so much for your confidence in me and for allowing me to provide this product to you. या बोल सकते हैं चंद्रा, मैं रियली बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे को विश्वास किया और मेरा प्रोडक्ट तुमने लिया. My insurance agent always said it with genuineness and sincerity. मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने हमेशा इसी तरह बात किया था मेरे साथ. His voice tone changed every time he said it. उसके वॉइस के टोन में भी चेंज आता था इस तरह से बात करने के समय. I could tell he meant it. और मैं ये बोल सकता हूँ जब वो बोलता था उसको मीन करता था वो. You wouldn't believe how few people thank me for my business. आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत कम लोग मेरे को थैंक यू करते हैं मेरे बिजनेस के लिए. Yeah, I was at the Taj in Guwahati, and when I left, they didn't say, Mr. Smith, thank you for staying with us. मैं ताज में था, वहाँ भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला था मेरे को, मिस्टर स्मिथ थैंक यू वेरी मच. That had been pretty simple for the general manager of the Taj to be very stressing to their employees, thank everybody for their business.
ऐसे ही वो जनरल मैनेजर के लिए भी कुछ मुश्किल काम नहीं था ऐसा बोलने के लिए. Very seldom do I go into a restaurant and they look at me and say, "We thank you for coming to our restaurant." बहुत कम है ऐसे जगह अगर मैं रेस्टोरेंट में गया उन्होंने बोला मेरे को हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए थैंक यू सर. And that's why this is good news for you. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा खबर है आपके लिए. Because when you say with sincerity, thank you for your business, you will be making an impression upon that person because they don't hear that very much. बिकॉज वैसे ही अगर आप सिंसियरली थैंक यू बोलोगे किसी को आपको वो बहुत अप्रिशिएट करेगा. आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं. And I would bet here in India it's even more rare than it is in the United और मैं States. जानता हूँ इंडिया में तो और भी कम सुनेगा आपको ये बात. Number 2, give samples of the product. उसके बाद प्रोडक्ट्स के सैंपल दीजिए. Yeah, if you have a customer and you continue to have them, try this product, try that product, they're going to be more likely to be loyal to you because of all the samples you give them. जब आप सैंपल देते रहते हो उनको तो वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं ज़्यादा. So every time you get together with a customer, give them a sample of each of our products. कभी भी कस्टमर के साथ आप मिलते हो तो कुछ 1 2 3 सैंपल उनको दे दीजिए. Or the ones at least you feel they would like to use. और ऐसे भी जो आप समझते हो कि उनके लिए ठीक है. And by the way, if I'm selling somebody a thing of Slim, when I get together with them, I'm going to have them mix up their first one while I'm with them. और अगर मैं किसी को स्लिम दिया हूं तो मैं उनके सामने एक मिक्स बनाऊंगा स्लिम का और उनके सामने दिखाऊंगा कैसे खाया जाता है. I want to get that box open. मैं वो बॉक्स को खोलूंगा And I want them to try it right then. और उनको बोलूंगा कि आप भी बनाइए अपना वाला. And I'm going to tell them to try to use a shaker cup so it doesn't clump up. और शेकर कप को कैसे यूज किया जाता है उसको सिखाऊंगा मैं. Now in the United States, when I sell Balance, which is our Slim, when I sell it, I always give somebody a shaker cup with the product. जब भी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बैलेंस बेचता हूं तो साथ में उनको शेकर कप भी देता हूं. You know why I give them a shaker cup? आपको मालूम है क्यों देता हूं? To help them have a better product experience. उसका ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस को अच्छा मिले. And then when they got that shaker cup sitting in their counter, every time they look and they go, "Oh, I got to take my Balance." और जब भी उनको शेकर कप अपने घर में दिखा तो उनको रिमाइंड हो जाएगा कि मेरे को बैलेंस खाना है अभी. Following up weekly will allow you to build a more loyal customer than if you're not following up at all. आप वीकली अगर फॉलो अप करते रहते हो आपको अच्छे कस्टमर मिलेंगे, लॉयल कस्टमर मिलेंगे. या अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो तो आपको शायद ही ये कस्टमर मिलेंगे कभी. Number 4, be intentional about doing the little things to build relationships with them. आपको इंटेंशन से के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है. The more that you build a relationship with your customers, the more they're going to stay loyal and do business with you, just like my insurance agent. जितना आप इंटेंशन के साथ उनके साथ काम करते हो वो आपके साथ उतना ही लॉयल बनेंगे जैसे मेरे इंश्योरेंस एजेंट थे. Offer refunds if they're not happy. अगर वो हैप्पी नहीं है तो आप उनको रिफंड ऑफर कीजिए. Some of the businesses I am most loyal to are businesses where I had a bad experience, but the way they handled the bad experience was so impressive that now I am loyal to their business. ऐसे एक्सपीरियंस हुए मेरे को जो बहुत खराब थे, बट जिस तरह से उन लोगों ने इस बिजनेस को हैंडल किया था मैं उस बिजनेस में अभी भी जुड़ा हूँ उन लोगों के साथ. They come to the table, "Mr. Smith, how was your chicken?" वो हमारे पास आते, टेबल के पास आते, पूछते चिकन कैसे था. Kind of dry. मैं बोलता हूँ सूखा सूखा था. "Mr. Smith, let me take that and let me get you a new piece." मिस्टर स्मिथ मैं इसको लेके जाता हूँ, आपको मैं नया वाला लेके आता हूँ. And I say, "No, it's okay, I'll eat it." मैं बोलता हूँ नहीं ठीक है छोड़ दो इसको. "Mr. Smith, we want to make sure you're happy. Let me get you a new piece of chicken." वो बोलते हैं मिस्टर स्मिथ हम चाहते हैं कि आप खुश रहो और मैं आपको नया चीज लाके जाता हूँ. "Would you allow me to take the chicken and get you a new piece?" क्या मैं लेके जाऊँ इसको नहीं पूछ लाऊं. And I say, "Sure." मैं बोलता हूँ ठीक है सर. And because they were insistent, I let them get me a new piece of chicken. ये हमेशा मेरे को इंटेंशन के साथ बोलता रहा बार बार तो मैंने बोला ठीक है आप लेकर आओ. And because of the way they treated me and making sure I was happy, I want to go back next time. और फिर उन्होंने जैसे मेरे को ट्रीट किया मेरे को हैप्पी रखा मैं श्योर हुआ कि मैं दोबारा उस होटल में आऊंगा. So understand, if somebody's not happy with one of our products, that's not a bad thing. That can end up being one of the best things that ever happens with your relationship with that customer. इसीलिए अगर हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी को खराब एक्सपीरियंस हुआ तो ये आपके अच्छा बात है, बिकॉज यहाँ से आप शुरू कर सकते हो उनके साथ लॉयल्टी का. Master retailers are those who are consistent in their prospecting, provide a high level of service, and are always looking at every little thing they can do to improve their results. मास्टर रिटेलर वो है जो कंसिस्टेंसी के साथ सिंसियरिटी के साथ हमेशा कस्टमर के साथ लगा रहता है.
Friends, if you will focus on the things I've shared here today, along with little things that you learn on your journey, teaching your people how to do what you're doing will allow you to move so much more volume through your business organization. दोस्तों, मैंने जो आज सिखाया है आपको और उसके साथ जो छोटी छोटी बातों के बारे में बोला है, अगर इसको अप्लाई करते हो तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है. See, in the United States, my business is 90% consumption. यूनाइटेड स्टेट्स में मेरा बिजनेस 90% कंजम्पशन के ऊपर चल रहा है. 10% is a result of new people who are joining and placing startup orders. 10% है वो लोग जो नए नए ज्वाइन करते हैं और अपने स्टार्टअप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. And that makes my business very secure और इस तरह मेरा बिजनेस बहुत ही सिक्योर्ड है. because it's not dependent upon recruiting. बिकॉज मेरा बिजनेस रिक्रूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. It's based upon thousands of people who are using our products every day. मेरा बिजनेस वैसे में डिपेंडेंट है हजारों लोगों के ऊपर जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. So my challenge to each of you is to lead by example and sell product. तो मेरा आपको यही मैं बोलना है कि आप एग्जाम्पल के साथ लीड कीजिए. Strive for excellence and look at every little thing you can do to improve your results. बेहतर से बेहतर बनने का कोशिश कीजिए वो छोटी छोटी बातों में. And then teach what you learned to your organization. और जो चीज आपने सीखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डाउनलाइंस में उसको सिखाइए. Did you get some good ideas? क्या आपको अच्छा आइडिया मिला? All right, let's take a